Sense the infinite. No, I'm not saying it. The box says this. This is Rajiv Makhni, and today we're going to do a very, very unusual double unboxing of two products from Oppo. जी हाँ, दो प्रोडक्ट्स ओप्पो से दोनों की अनबॉक्सिंग होने वाली है. अभी अनाउंस हुए हैं, अभी रिलीज हुए हैं, एंड इट्स ऑलरेडी हियर विद मी. पहले तो बहुत ही स्पेशल रिव्यू बॉक्स है ये. आई एम ग्लैड टू सी मेजर इनोवेशन हो रहा है इन द वे कंपनीज जो हैं, जो अपना बॉक्स भेजती ना, रिव्यूअर बॉक्स, द वे दे सेंड दैट आउट. आई थिंक द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग इन दैट शोज कि कितनी लेवल ऑफ इनोवेशन है आजकल. ओके, बहुत चिट चैट हो गई. लेट्स हिट द ग्राउंड रनिंग. बहुत काम करना है हम लोग ने. लेट्स गेट द टू प्रोडक्ट्स आउट. सो this is the box, looks absolutely fantastic, and this is the brand new Oppo Reno 4 Pro. राइट, इस बॉक्स को निकाल लेते हैं इसमें से. तो शुरू करेंगे विद दिस, द Oppo Reno 4 Pro. इनका जो फ़ोन निकला है, उसके बाद चलेंगे टुवर्ड्स देयर ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच. उसको अभी बहुत लोग का गेटिंग वेरी एक्साइटेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ़ोन. Oppo कहता है इस फ़ोन को जस्ट थिन जस्ट राइट फोन, और ये मजाक नहीं कर रहे हैं. इट एक्चुअली वेज जस्ट 161 ग्राम्स एंड इट इज 7.7 मिलीमीटर्स थिन. हैंड फील ग्रिप इज जस्ट राइट, ग्रेट फिट एंड वेरी वेरी गुड फिनिश. बहुत अच्छी फिनिश है इसकी. दो कलर्स हैं इसमें, स्टारी नाइट और सिल्की वाइट. मेरे पास ऑफ कोर्स है उनका स्टारी नाइट. ऑन द बैक ओप्पो ने दिया एक बहुत ही यूनिक एंटी ग्लेयर फिनिश. बड़ा प्रीमियम लुक है इसकी. आई रियली लाइक इट. 3D कर्व्ड बैक है, मैट फिनिश है, वेरी प्रीमियम. ऑल्सो फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट कंप्लीटली. अब मैं जितना मर्जी इसमें कुछ कर लूँ, कुछ नहीं होने वाला. लेट्स मूव टू द फ्रंट. पहली चीज आप ये नोटिस करेंगे एंड दैट हिट्स यू इज द स्क्रीन. Lots of things happening here on the front screen. 6.5 inch की super 2400 by 1080 FHD plus Super AMOLED 3D curved borderless screen with 90 Hz refresh rate and up to 180 Hz touch sampling rate. मैंने कहा था ना, बहुत कुछ हो रहा है front screen पे. जो fluidity and smoothness of the display है, बहुत noticeable है when you're scrolling through a photo album or social media जो है. It actually shows through very very well. Looks really really nice. Then this curved screen, Oppo कहते हैं इसका नाम है 3D borderless sense screen. स्क्रीन जो है कर्व करती है 55.9 डिग्रीज यहाँ पे एट द बॉर्डर. इफ यू होल्ड इट ऑन दैट साइड ना, तो लगता है जैसे कि फोन जो है सिर्फ 2.9 mm थिन है because of the actually the curved screen, which looks very very nice. Single punch hole display है in the front with a screen to body ratio of 92.01%. Very high contrast ratio. 1100 nits की पीक ब्राइटनेस है, यानी कि अगर आप इसको बाहर भी लेके जाएंगे टुवर्ड्स सनलाइट, नो प्रॉब्लम. TUV Rhineland फुल केयर डिस्प्ले सर्टिफिकेशन है टू मिनिमाइज दैट अननेचुरल लाइट जो बहुत हार्मफुल है टू ह्यूमन आई. सो दैट ऑल्सो सर्टिफिकेशन इज पार्ट ऑफ इट. प्लस एक आई केयर मोड है फॉर दोज दैट एक्चुअली read या they watch movies or something or shows late at night. Hidden fingerprint scanner that works very very fast. Now for one another main feature, 65 watt Super VOOC 2.0 fast charger which charges the device kitna 100% in just 36 minutes. And in this too Oppo went very safe. सिर्फ फास्ट चार्जिंग नहीं है, TUV सेफ फास्ट चार्जिंग सिस्टम सर्टिफिकेशन आता है विद 5 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि चार्जिंग अडेप्टर, केबल, मोबाइल फोन, बैटरी, सब में अपने प्रोटेक्शन चिपसेट्स बिल्ट इन है. यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद द फास्ट चार्जर और द एक्चुअल थिंग वार्मिंग अप. प्लस इट ऑल्सो हैज सुपर पावर सेविंग मोड एंड समथिंग वेरी न्यू, सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय मोड. मोर अबाउट दिस जब मैं फुल रिव्यू करूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अब बात करते हैं अबाउट द इनसाइड्स, अबाउट द फोन, अबाउट द परफॉर्मेंस, अबाउट द प्रोसेसर, अबाउट एवरीथिंग एल्स. क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G, 8 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है, प्लस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ 3D मल्टी कूलिंग सिस्टम फॉर एडवांस्ड कूलिंग. यानी कि आप कोई गेम्स खेल रहे हैं, बहुत लंबी मूवीज देख रहे हैं, या आप इसे चार्ज कर रहे हैं, द फोन विल रिमेन कूल ऑल थ्रू. नाउ फॉर व्हाट ओप्पो रेनो सीरीज इज नोन फॉर, ऑप्टिक्स एंड camera. Lots of new innovations out here. AI color portrait where the person in the shot is in natural color, लेकिन जो background है वो पूरा black and white बन जाता है, बहुत ही artistic है. फिर night flare portrait,
अल्ट्रा डार्क मोड, अल्ट्रा नाइट सेल्फी मोड है इसमें, वीडियो मोड्स हैं बहुत सारे इंक्लूडिंग 960 फ्रेम्स पर सेकेंड स्मार्ट स्लो मोशन। कैन यू इमेजिन, इट्स एक्चुअली इन अ फोन नाउ 960 फ्रेम्स पर सेकेंड। फिर मोनोक्रोम वीडियो दैट एक्चुअली गिव्स वन ऑफ 3 कलर्स एंड अल्ट्रा स्टेडी वीडियो 3.0। Each of these को मैं टेस्ट आउट करूंगा when I will actually do the full review on my show and I'll show you all the results out here. Front camera 32 megapixel selfie camera and on the back it's quad camera setup with 48 megapixel main lens with a Sony IMX586 with an f-stop of 1.7 जो कि बहुत ही अच्छा है for low light photography। आप इसके साथ शूट कर सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। 108 मेगापिक्सल के भी आप शॉट्स ले सकते हैं इसमें ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि इसमें है एक हाई रेजोल्यूशन एल्गोरिदम दैट एक्चुअली मेक्स इट 108 मेगापिक्सल। 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम कैमरा है। ओप्पो ने बहुत स्मार्टली इसमें एक और चीज़ डाली है, स्मार्ट वीडियो एडिटर सो लूप, जो कि बिल्ट इन है। आई एम गोइंग टू गिव दैट ऑल्सो अ शॉट इन माय फुल रिव्यू, क्योंकि उसमें है कहा जाता है इट कैन क्रिएट अ वीडियो विद अ सिंगल टैप, और अगर आप कोई म्यूजिक ट्रैक लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिंक करके एडिट बना देगा along with the music track. So all things to try out. Reno 4 Pro comes with ColorOS 7.2, lots of new features to try out including the icon pull down gesture, send files wirelessly and effortlessly, the quick return bubble, AI app preloading and anti-fragmentation engine जो optimize कर देता है fragmentation of physical and virtual memory. So now it's actually built into the phone. That then was a very quick look, first impression unboxing of the Oppo Reno 4 Pro. And now let's move on to the watch that everyone has been waiting for, the Oppo Watch. Right in the front. मेरे पास है Oppo Watch 46mm, पहली ऐसी स्मार्ट वॉच है to actually have a AMOLED dual curved, मैं आपको दिखा देता हूँ, on the two sides dual curved AMOLED display। हम लोग जो है हाई एंड फोन्स में हम लोग ने इसके बारे में सुना है, वॉच में कभी नहीं देखा। वॉच है 72.76% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, यानी कि जो स्क्रीन है इज लिटरली ऑल स्क्रीन। 19 स्टेप का पॉलिशिंग प्रोसेस है, रेक्टेंगुलर 1.91 इंच की स्क्रीन है, सो इट्स क्वाइट बिग। 3D फ्लेक्सिबल एमोलेड स्क्रीन विद 402 by 476 की रेजोल्यूशन, वेरी हाई रेजोल्यूशन। 326 ppi पिक्सल डेंसिटी है इसकी। स्क्रीन ब्राइटनेस जो है कैन गो टू 500 निट्स, बट यू कैन increase it to 1000 nits एक स्मार्ट वॉच में। दैट मीन्स हाई ब्राइटनेस एंड क्लैरिटी इवन फॉर आउटडोर यूज। अगर आप outside है in bright sunlight you can still see it. It's built from 6 series aluminum alloy जो इसकी फ्रेम है, comes in black and glossy gold, मेरे पास black आया है। इसमें एक और फीचर है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, 1 button strap removal है इसमें, interchangeable straps available हैं in a variety of colors and materials। और एक और चीज़ that I want to point out, something very interesting that I will try out in my full review for sure, एक यूनिक स्टाइल मैचिंग AI वॉच फेस है, यानी कि अगर आप अपनी फोटो लें एंड यू फोटोग्राफ योरसेल्फ विद द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, योर आउटफिट, तो ओप्पो वॉच अपने आप AI को यूज करेगा एंड इट विल जनरेट अ मैचिंग वॉच फेस। Other cool stuff, memory album watch face है इसमें, users can actually use photos to make a watch face wallpaper and that can actually change। यहाँ daily activity watch face है इसमें that shows your steps, workout time, calories burned and other stuff. Lots of other stuff also that this watch has, like balloons, hidden features हैं like balloons, and you can even custom design। आप कोई watch face use करते हैं उसमें कुछ customization भी कर सकते हैं to actually suit your needs। Now for something I haven't ever seen in a watch, मैंने तो इसके बारे कभी सोचा भी नहीं था, और वो है dual chip endurance system that switches between एक Qualcomm प्रोसेसर है इसमें, Qualcomm का Snapdragon Wear 3100 प्लेटफॉर्म, और Ambic का Apollo 3 chip driven power saver mode, बैलेंसिंग हाई परफॉर्मेंस एक तरफ एंड एनर्जी एफिशिएंसी एक तरफ। से ये दोनों प्रोसेसर्स हैं इसके अंदर एंड दे एक्चुअली स्विच फ्रॉम वन टू अनदर। यू कैन गो फ्रॉम 36 आवर्स ऑफ यूजेज व्हेन यू आर यूजिंग एवरीथिंग टू अ फुल 21 डेज of power saving use. Oppo also लेके आया है fast charging to a watch, Whoop flash charging now in a smartphone। 75 मिनट में पूरा का पूरा चार्ज, and it charges to 46% in just
15 minutes. Watch जो है runs on Wear OS by Google, लेकिन aesthetics जो है उन्होंने लिए हैं from Oppo's Color OS for smartphones. All the core Google जो watch के apps हैं, they are all there and access to hundreds and hundreds of app on Google Play for Wear OS जो उनका store है by Google. लेकिन मैसेजिंग हो, म्यूज़िक हो, स्ट्रीमिंग हो, ऑन द गो पेमेंट्स हो विद नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि NFC, everything is there and lots more that you can actually add on. Then there is Google Voice. Just talk to your watch and get answers to all your questions. आप एक रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं, एक नया टास्क ऐड कर सकते हैं, कैलेंडर रिमाइंडर्स आ सकते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन दे सकती है ये वॉच आपको, ट्रांसलेशंस दे सकती है आपको एंड अ होल लॉट मोर. Oppo Watch also supports receiving notifications and sending replies in some of the most popular social apps such as Messenger ho, WhatsApp ho, Line ho. Reply and receive, both things can be done. Oppo Watch has also got heart rate monitoring and that is also round the clock and also monitors your sleep quality at night. इन दोनों चीज़ों को मैं चेक करूँगा in my full review. Also has move and get up reminders and stress relief breathing guidance. Oppo Watch also has 5 exercise sensors जो कि built in है इसमें and GPS navigation system also that is also built in. Oppo Watch बहुत accurately track कर सकता है your route. It can measure your heart rate. It can calculate the amount of exercise that you are actually doing every day on a daily basis. तो 90 plus trackable workouts तो हैं ही इसमें from Google Fit, लेकिन इसमें 5 very special personalized coaching workout modes हैं. ऐसे 5 workout modes इन्होंने इसमें बनाए हैं, which is fitness run, fat burn run, outdoor walk, outdoor cycling and something that I love and I want to really try out, swimming. इसमें also built in है 5-minute workout app that provides teaching videos, यानी कि पूरे 5 मिनट के videos हैं with voice guidance. So it looks like this is quite a winner from Oppo in every which way. I love the look of it. I love this curved design. I love the features that they've done. That then is the unboxing for today, the Oppo Reno 4 Pro and the watch, the Oppo Watch. Any questions or anything you want, अगर आप चाहते हैं मैं कुछ specially try out करूँ for my full review which will be here on this channel very soon, just leave a comment. I'll see you very, very soon.